हेलो एवरीवन। यूट्यूब लाइव सेशन में हमारा आज का टॉपिक है रूरल इंडिया फील्स द इन्फ्लेशन पिंच। जानते हैं ऐसा क्या हुआ है रूरल डिमांड को। When it comes to giving a first-hand account of rural inflation, few companies have their ear to the ground as Hindustan Unilever has. मार्च 2023 क्वार्टर में इंडिया के FMCG मार्केट में मुख्य रूप से अर्बन एरियाज के माध्यम से ग्रोथ देखी गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी पुष्टि यूनिलीवर के चीफ ने भी की थी। The earnings from rural areas have been lackadaisical, leading to Hindustan Unilever Limited delivering inferior sequential growth as compared to analyst expectations. But what factors have led to rural areas not showing the obvious cheerful behavior exhibited by its urban counterparts? Well, rural volumes were far from impressive. मार्च 2023 क्वार्टर में HUL रिपोर्टेड 13% हायर नेट प्रॉफिट्स एट ₹2601 करोड़, जबकि टोटल सेल्स 11% बढ़ी एट ₹14,953 करोड़. Earnings before interest margins stood at 23.7%, which is down 90 bps. संजीव मेहता कंपनी के CEO and MD के अनुसार the numbers indicate a year of fortitude and resilience amid inflationary pressures and fear of recession. However, volumes growth was heavily muted at 4% for the quarter, as rural customers looked to cut down on spending on preferred even unbranded products to deal with inflationary pressures. HUL का यूनिलीवर की ग्लोबल सेल्स में 12% हिस्सा है and is the priority market for the conglomerate. वैसे this can be blamed it on weak agriculture output last year. The tapering of rural consumptions can be mainly attributed to a 4-quarter low growth in the real agriculture gross value added GVA. अनाज की महंगाई से ये बात जाहिर है. Also, the persistent ebbing in non-agricultural wages and a sharp slowdown in two-wheeler sales were indicators. These imply a higher price for raw materials like diesel, fertilizers, etc. being levied upon farmers than the sales they generate out of such products. हालांकि साल 2023 इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक बेहतर साल होने की उम्मीद है. फार्मर्स स्क्वीज्ड बाय इनपुट इन्फ्लेशन. क्लाइमेट फ्रंट पे बात करें तो विंटर रेनफॉल रबी सीजन के लिए स्पेशली यूजफुल होता है, लेकिन इस साल खरीफ सीजन में अल नीनो की चिंता है एंड दिस इज मेकिंग फार्मर्स वेरी. Also, input costs have gone up 24% YOY, while the growth in MSP is just about 9% YOY, creating a painful gap. As a result, farmers are playing on the back foot and taking a very defensive, park the bus approach to their finances amid soaring inflation and recession fears. ये सब बातें अब बाद में. Let us look at the positive side of the story. The continuous rounds of hawkish interest rate policies by the RBI managed to stagnate inflation, although the extent of that is still a mystery. RBI का ये स्टेप ग्रामीणों के लिए, that means rural citizens के लिए morale booster का काम करेगा, as it could alleviate some financial stress on the farmers. The headwinds hopefully will not last long, as experts remain bullish on the immense growth potential which rural markets offer. With the union budget focusing on job generation capability development, you could see a rural multiplier effect soon. अब आगे क्या किया जा सकता है? What can be done? हालांकि रूरल डिमांड के आधार पर गवर्नमेंट कुछ तरीकों से मदद कर सकती है. मॉनसून की वॉलेटाइल कंडीशंस देखते हुए द गवर्नमेंट शुड आइडियली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स एंड लेवरेजिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज. India also faces one of the highest post-harvest losses. So, there must be a focus on developing low-capacity warehouses and micro-cold storages for reducing wastage of produce. Lastly, the expediting of 5G will help catalyze the adoption of agri-tech methods and generate further opportunities in rural India. उम्मीद है इन सब से हमारे देश की रूरल फार्मिंग सिचुएशंस बेहतर हो जाए. आज के लाइव सेशन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. मीन टाइम सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एंड स्टे अपडेटेड.